welcome. You're watching 6 Stories at 6. I am Tanisha Avasti. We have a power-packed show lineup for you today on a Tuesday evening. Now, from across the nation, we tell you stories that concern you and set the agenda for the day. Starting first up, there is a huge showdown over the CAG report in the Delhi Assembly, and the Aam Aadmi Party and BJP are up in arms against each other. In anti-Sikh riot case, former Congress MP Sajjan Kumar has been awarded life imprisonment. Is Jagdish Tytler next? In Telangana, 8 workers are still trapped for over 72 hours now after a tunnel collapsed, but there seems to be a big breakthrough in the case. Moving on, Yogi Adityanath in the Uttar Pradesh Assembly has given a fierce counter to Sanatan baiters, while Akhilesh compares Yogi to Ravan. In West Bengal, a 27-year-old was chased and harassed by Eve teasers, wherein while escaping, her car overturned and she died on spot. The Bengal police, however, denies the claims. And the big global headlines: once enemies, now friends. United States joins Russia to vote against UN resolution condemning Russia's war against the Ukraine. So these are the 6 stories that we have lined up for you, starting first up with the top focus. 15 Aam Aadmi Party MLAs, including ex-Chief Minister Atishi, who is now the leader of opposition, were suspended from the Delhi Assembly for a day. This in a face-off with the ruling Bharatiya Janata Party over an auditor's report into the alleged liquor policy scam. Here's what happened today. Day 2 of the Delhi Assembly saw a huge showdown. अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। 15 Aam Aadmi Party MLAs, including ex-Chief Minister Atishi, who is now the leader of the opposition, was suspended from the Delhi Assembly for the day. This over a face-off with the ruling BJP over an auditor's report into the alleged liquor policy scam. मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, The House session was then extended by 2 days. Out of the 14 CAG reports, 3 have been tabled, one of them being over the Liquorgate scam allegedly by the AAP. कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है। गलत नियम बनाए गए और अब ये जांच की गति और बढ़ेगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, ऐसा हमारा मानना है। और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं, ये अपने सही ठिकाने पर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। Another investigates the Sheesh Mahal scam, which claims taxpayers' money was used to refurnish with luxury fittings the bungalow Mr. Kejriwal occupied when he was Chief Minister. AAP MLAs countered the BJP by alleging that they had insulted Baba Saheb Ambedkar. AAP protested the alleged removal of B.R. Ambedkar's photographs and that of Bhagat Singh from the office of the new Chief Minister Rekha Gupta. These photos, the party said, had been replaced with those of Prime Minister Narendra Modi. इससे गंभीर आरोप क्या होगा
क्या आपने संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी? इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे लगाए हमें सदन से निष्कासित कर दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। Allegations and counter-allegations. The face-off between the AAP and the BJP is only snowballing into a huge political controversy. Joining me on the broadcast is Shikha Roy. She is a BJP MLA. Shikha, the Aam Aadmi Party has been alleging that you have insulted, the BJP in the House has insulted Dr. B.R. Ambedkar. What is your counter to that? See, these are all, again, the tactics that they have been playing on. They are a party of only dramas and notankis, which they have done today also. Very unfortunate, very undignified that they didn't even let the LG to initiate his speech today in the House. Right. The issue that they had taken up yesterday was clarified even after that. Today, when there was no occasion to do all this, they have done this only to avoid the laying of CAG report. They wanted themselves to be out because they knew that the report is coming and they would not have any answer to that. As we all know, each and every page of the report exposes them in every way. All the facts that we have been stating, we have been saying it for the last 2 years, are now one by one put up in this report. Right. And you can see every conclusion says, right from loss of 2,000 crore revenue to everything, the way the licenses were given, the way the policy was framed to give benefits to some of his close aides, right. Everything, it is now in the CAG report. To avoid Shikha, this, right. This ruckus was created. Shikha, I was just coming to that. Former Chief Minister of Delhi, Atashi, claims that she has already submitted the report of the CAG to the Speaker of the Assembly when she was in power. See, all these, again I'm saying, they're a party of tactics and dramas which they have been doing. This is what they have done to the people of Delhi for the last 10 years. If it was sent to the Speaker, why was it not laid? Not at all. It was not so. They should have placed it many years before. Right. No CAG report was laid by them during this regime. Right? So where is the answer to that? They said we had given it to the Speaker. If that would have been so, why were they not in the House then to answer that? Right. Shikha, thank you very much for speaking to Republic and joining us on the broadcast. The other story that we're tracking on the broadcast is about the 1984 Sikh riot case. Now, the former Congress MP Sajjan Kumar has been sentenced to life imprisonment for his role in the killing of 2 Sikh during the 1984 anti-Sikh riots in Delhi. This marks the second life sentence for Sajjan Kumar, who was already serving a life term for his involvement in the Delhi cantonment riot case. So it's a big setback to the former Congress MP Sajjan Kumar, who has been sentenced, who has been awarded life imprisonment in the case. Remember, the Sikh has been protesting and demanding death penalty. Joining me on the broadcast is Surjit Singh. He is a 1984 anti-Sikh riot victim. Surjit Singh, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रिपब्लिक से बात करने के लिए. लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो अभी कोर्ट ने ग्रांट कर दी है सज्जन कुमार को. हालांकि बहुत सारे सिख कम्युनिटी के मेंबर्स ये भी बोल रहे हैं कि उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए. ऐसा मैडम जी, जो सज्जन कुमार है, इसने दिल्ली में कम से कम 500-600 बंदे का कत्लेआम करवाया. ये 2 जो जसवंत सिंह और उसका तरनजीत बीर सिंह है, इसके बेटे का जो मर्डर इसने करवाया. जब कत्लेआम हो रहा था, इसके साथ 400-400 500-500 बंदा जो कांग्रेसी थे, जो दिल्ली में गुंडे थे कांग्रेसी, उन्होंने ये कत्लेआम अलग अलग जगहों पर किया है. हमें आज उम्मीद थी, पूरी आस थी
कि ये इसको कम से कम फांसी होगी, सज्जन कुमार को फांसी नहीं हुई है। सज्जन कुमार जैसे जगदीश चैटलर है, कमलनाथ है और अजय माकन है, सैकड़े ऐसे हजारों कांग्रेसी शामिल हैं इसमें जिन्होंने कत्लेआम ये दिल्ली में करवाया। लोगों के घर बार लुटे गए, लोगों के घर बार लुटे इन्होंने, हजारा करोड़ी प्रॉपर्टी सड़ के स्वाह कर दी इन्होंने। अज सज्जन कुमार ਨੂੰ ਜੇ फांसी ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਹਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ फांसी ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। 4 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। इसनूं फांसी होनी चाहिए। तो ਜਿਹੜੇ बाकी ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25,000 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू द अदर स्टोरीज नाउ। 3 days after 8 men got trapped inside the Srisalam left bank canal tunnel in Telangana's Nagar Kurnool district, a multi-agency team is working on clearing the locomotive track inside the tunnel with the aim of using it to transport equipment for further rescue operations. Aneri, my colleague, is reporting from ground zero on that. Rescue operations are still underway. Aneri, you are reporting near the Srisalam tunnel. What is the update on ground? How many days more till the 8 workers are finally rescued? Well, a very difficult situation for the rescue teams as well. And also when we talk about the situation right now, the rescue teams are still trying to reach to that very spot where the incident has taken place because of the mud slush and the water which is continuously flowing inside the tunnel. We see that the rescue teams are facing a lot of difficulty. There are around 11 teams which have been working round the clock for this rescue operation. And also not only that, but also we have been seeing that today the ministers who were present there at the tunnel side, they also said that this is one of the difficult rescue operations which right now everyone has been facing, because this is one of the longest tunnels, 44 kilometers long tunnel, and this tunnel doesn't have an exit point anywhere in between the tunnel. So that is the reason, because the entry and exit of the tunnel is only one. So bringing out and reaching till there is also one big task that the authorities have been facing right now. Absolutely, Aneri. Thank you for sharing all those updates on the broadcast. Moving on, the fight is direct and straightforward. It is Yogi Adityanath versus the Mahakumbh beaters. Today, for the second day straight in the Uttar Pradesh Assembly, the Uttar Pradesh Chief Minister took on the Samajwadi Party over their attempts to malign the Mahakumbh. This is by far the most fierce and direct attack. महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को घोड़े मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली, और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वाला। डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा
सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है। Moving on to the other stories that we are tracking, and this is from the state of West Bengal. Now, a 27-year-old woman died after her car overturned on a highway in West Bengal's Panagarh. The accident, which occurred on Sunday, allegedly followed a high-speed chase involving a group of intoxicated men in a Hyundai Creta pursuing the woman who was travelling from Chandranagar to Bihar's Gaya. However, a day after the incident, the West Bengal police has dismissed the reports of harassment and said it was a case of road rage, asserting that the victim's car was at fault. Meanwhile, the BJP MLA Agnimitra Paul lashed out at the Chief Minister Mamata Banerjee over the accident, alleging women are not safe in Bengal. Here's what the driver of the victim had to say. ঘটে আপনাদের পুরনো যে হাই রোডটা আগে ছিল পানাগড়ে, তার একটুখানি কিছুটা আগে ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প আছে। আচ্ছা, ওখানে আমরা পেট্রোল ফুল ট্যাঙ্কি ভরি। তা আমাদের যে ম্যাডাম উনি নেবে পেমেন্ট করেছে গাড়ি থেকে। পেমেন্ট করার হাফ কিলোমিটার গাড়ি যায়নি, মানে ম্যাডাম ফোনে কথা বলছিল, কথা বলতে বলতে ফোনটা রাখার পরেই একটা আচমকাই গাড়ি এসে, সাদা গাড়ি, এই গাড়িটা, হ্যাঁ এই গাড়িটা এনার ডান দিকের গেট দিয়ে আমার বাঁ দিকে পুরো চেপে দিল। যে আমার ডিভাইডারের ওপর গাড়িটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তুলতে পারিনি। তারপর আমি আবার স্লো হয়ে আমি বাঁ দিকের থানার রাস্তাটা ধরেছিলাম, কিন্তু ও আমাকে আবার বাঁ দিক থেকে ওভারটেক করে এসে আবার মেরেছে, ধাক্কা মেরে গাড়িটাকে পাল্টি করে দিয়েছে। তার মধ্যে ম্যাডাম আমাদের স্পটে মারা গেছে। India abstained from voting on a United Nations General Assembly draft resolution which called for de-escalation of the Russia-Ukraine war and a peaceful resolution of the war against Ukraine. Meanwhile, in a stark departure from their earlier stance, the United Nations voted against the resolution, aligning with Russia for the first time since the war started. The Ukraine-Russia conflict has been ongoing for over 1,000 days now. With diminishing hope and unreliable support, a resolution titled Advancing a Comprehensive, Just and Lasting Peace in Ukraine was tabled in the United Nations General Assembly. The resolution was put to vote before the 193 member states of the UNGA. While 93 countries voted in favor, India chose to abstain. India was among the 65 countries that abstained from voting on the Europe-backed resolution. Notably, in a stark departure from their earlier stance, the United States voted against the resolution, aligning with Russia for the first time since the war started. And that's all that we could pack in this edition of 6 Stories at 6. Thank you for watching. Don't go anywhere. Live and breaking coming up next.